क्वेश्चन नंबर 45 श्री कृपाल बालाजी तुमाने जी। क्वेश्चन नंबर 45। ये किस्मत के धनी हैं। The statement is laid on the tables. आप जब से चेयर पे बैठे हो तो किस्मत अच्छी होती जा रही। धन्यवाद स्पीकर महोदय। देश में 62 छावनियां हैं और इस 62 छावनियों में वहाँ रहने वाले लोगों की और बाहर से उनके जो रहते हैं उनको मिलने जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के लिए 2017 में उस समय के संरक्षण मंत्री साहब ने 3 बार इसकी बैठकें ली और इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश किया। बहुत सारी समस्या सुलझ गई, लेकिन मैं मानस्टार्ट क्वेश्चन में 2734 नंबर का मेरा जो 4 फरवरी 2019 को लगा था, उसमें ये कहा गया था कि ये समस्या सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा और गठन किया भी गया है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। तो ये रिपोर्ट हम कब पब्लिश करेंगे और उस पर कब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं? सर, माननीय सदस्य जी ने सही प्रश्न उठाया और ये भी सच है कि हाँ, एक कमेटी बनाया था और उसका रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है। मंत्रालय उसके ऊपर विस्तार से चिंता कर रही है और उसके अनुसार, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आगे बढ़ने का भी कोशिश हो रही है सर। इसीलिए ये गंभीर मामला है और कंटोनमेंट में जिन जिन का एप्लीकेशन पेंडिंग है रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन के लिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होती रह रही है। फिर भी इनके रिकमेंडेशन, इस कमेटी का रिकमेंडेशन का भी सीरियसली ले रही है। धन्यवाद महोदय। रिकमेंडेशन के पब्लिश जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा मैडम। पब्लिश ही नहीं हो रहा है, काफ़ी साल, 1 साल हो गया, पब्लिश कब करोगे? मैं माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर में एक और आपने कहा है कि फ्री होल्डिंग के लिए सिविल क्षेत्र के पट्टेदारों HOR से 391 आवेदन, जिसमें कि 253 ओल्ड ग्रैंड संपत्तियों, ये 138 फॉर पट्टा युक्त संपत्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें भूमि की कीमत 25% की राशि छावनी में जमा की गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कुल कितनी राशि जमा हुई है और इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है? Sir, the honorable member is right. About 636 cases where sanction for freeholding of properties and cantonments have been accorded by the ministry already. But from among these 636 cases, 526 are in respect of old grand bungalows, and also the 110 left over are on leased properties of the civil area. The payment structure is such that at the time of application you give only 25%, and only after that STR based calculation, the standard table of rates based calculation is sanctioned, is determined, and when the sanction is made is when the rest 75% has to be paid. श्री गिरीश बापट जी। महोदय, मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि देश में 62 कैंटोनमेंट है, उसमें से 6 महाराष्ट्र में है, 3 मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जो नागरिकरण हो रहा है उसके वास्ते ब्रिगेडियर से परमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो मेंटेनेंस फंड है, जहां स्कूल होनी चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए, रोड बनाने की तकलीफ है, उसके लिए पैसा नहीं मिलता, और जो पैसा सेंट्रल में आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। क्या ये कैंटोनमेंट के बारे में जो रिपोर्ट आया है उसका कुछ सुझाव जो उसमें है इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अगर नहीं तो वहाँ ग्राम पंचायत ने तो पंचायत बना दीजिए, क्योंकि मिलिट्री का एरिया ब्रिटिश ज़माने से जितना है उतना है। गाँव को स्मशान भूमि में जाने के लिए भी अलाउड नहीं करते, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी नहीं करते, बिल्डिंग परमिशन को 6-6 महीना रुकना पड़ता है। अगर ये अपने देश के नागरिक है, ब्रिटिश ज़माने में ठीक था, अभी सब भारतीय है यहाँ, तो बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी आपको विनंती है, कृपा करके इसमें ध्यान देकर
कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले। Sir, honorable member has brought in various different issues into this question, sir. As regards the question about in the cantonment area, many of the civic communities for which the cantonment board should be undertaking the expenditure, money doesn't reach the cantonment boards. This is a larger issue of how monies are devolved and how every state government shall further devolve it to give those local bodies, one of whom is also a cantonment body. So that is a larger issue in which the Finance Commission will also have to come into the picture. But however, when the monies are given to the state governments, it's up to the state government also to further devolve it down so that those living in those cantonment boards are also benefiting from the local bodies' grants which should reach them. That is one side of the question, sir. The other one, of course, is a question of the time taken for clearance in these kind of applications. Yes, it has been taking a long time, and also the process itself is going through various different stages from the local military authority to up to the competent authority, which is the Ministry of Defense. But however, based on the committee that all of us are talking about, Sumit Bose committee, which has already submitted the report, I'm sure this period of processing after the application is made will be condensed, and it shouldn't be taking so long. Question number 46, Sri Sridhar Kotagiri. Question number 46. Sir, an answer is laid on the table of. माननीय सदस्य Speaker sir, about 25 defense canteen stores were given notices in December saying that the 31st December was going to be their last day, and one of which is in my parliament, Eluru. There are about 4,000 ex-servicemen in my district, and they are put to hardship. They were in a panicking mode when I requested, and they postponed the closure. So I just want an assurance from the government that if we are closing those, we're making alternative arrangements, or what is the plan? So generally, closure doesn't happen of canteen stores department. There can be a rationalization of its locations, because if there are number of people dependent on the canteen stores department are lesser, and if there are nearby another provision, therefore they would try to do it, but normally closure does not happen. Whilst the numbers are very determined about the, those servicemen who are living in the area or ex-servicemen who are living in the area for whose benefit canteen stores departments are run. So normally there is no closure. Sometimes there are rationalization. In your particular case, I'm sure the ministry will be able to respond. Sri One supplement. So I was hoping the government can start an online service for defense canteen stores as well, at least for the unrestricted goods. Sri Manikam Tagore ji. Thank you, sir. Sir, I represent a constituency which is an aspirational district, and Madam Minister has also visited Virudhunagar many times. And it has many ex-servicemen who are in Virudhunagar district, and it has a CSD. And now there are reports that the CSD is going to be closed. And as an aspirational district, the government takes aspirational districts in an important way. Whether this Honorable Minister can assure that the CSD in Virudhunagar will not be closed. Sir, as I said in the previous reply, sir, closures don't normally happen. I'm not sure about the specific instance where the honorable member is referring, the aspirational district, one of the two in Tamil Nadu, Virudhunagar. I will have to certainly go back to the specific issue of Virudhunagar and the canteen stores department there, under what consideration it is. But as it is, closures normally don't happen. But I will on Virudhunagar come back to.